Hello, sir. Yes, madam. Good afternoon. Good afternoon, madam. Good afternoon. I am Pallavi here. I will be the host for today's session. Okay, madam. I need few time to make this session live on YouTube and Facebook. Meanwhile, you can share your PowerPoint presentation. Okay, madam. Shall we start now, sir? Hello. Shall we start now? Hello. Hello. Yes. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. You are perfectly audible. Okay. Um, So, it is pleasure Wait a 5 minutes, sir. for have. Hello. Okay. Wait a Okay. five Okay, minutes. ma'am. Okay, Hello, everyone. ma'am. Present here virtually. I am Pallavi here, and I welcome you all for today's session, which is titled as Human Resources Development Revolution in Manufacturing Sector in India. And presenting this session, we have with us our today's expert, Mr. Dhaval Haryanvi sir. Dhaval Yas Haryanvi sir, presently working as Assistant Professor in esteemed college Vidya Bharati Trust of Master in Computer Application MBA. He is pursuing doctorate in management from GTU. He has 10 years of professional experience as professor, 5 years of corporate experience and 5 years of academic experience. Without wasting much time, I am welcome to Mr. Dhaval Haryani sir. You may start now, sir. Okay. Thank you, Pallavi madam, for your. It is my gratitude for having a good introduction. So, my today's topic is HR development in manufacturing sector. Right? So it is a revolution in India, human resource development, a revolution in India, especially in manufacturing sector. So as we can see, the manufacturing sector of today's scenario, uh, which we can see in any manufacturing industry, either it is Make in India campaign, which is in India itself, or it is an MNC company, that is a multinational company, right? The main focus of any company is to increase sales, right? To have strong sales, right? So, how a company can increase their strong sales without less investment? The only thing is they require human capital, right? Effective human capital. So we can say that with effective human capital, there would be the fastest growth of manufacturing and service sector, right? And they can increase their strong sales efforts with less investment. So we must know what is organizational development, right? So organizational development is a way to improve the company's process while accepting the change. Now we can say company are not accepting the change, and because they are not accepting the change, there is not continuous development in organization. And a company is having continuous development in organization is human resource development. So human resource development is a framework where there is continuous development with organizational and personal goal achievement with effective knowledge, skills, and ability.
So if a company is not having KSA, that is knowledge, skills, and ability of their employee in continuous phase, we can say HRD is not going in a correct span. So human resource development is developing the most superior workforce of your organization, right? So यहाँ पे क्या हो रहा है अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो सीनियर लेवल का वर्कफोर्स है उनके लिए हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, उनके गोल को और हमें कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड बनाना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बने। अगर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सेंट्रिक बनेगी ना, तब हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज की स्ट्रेटेजीज, उसकी पॉलिसीज, स्टैंडर्ड, सिस्टम एंड प्रोसेस पैरेलल लाइन इन लाइन इंप्लीमेंट हो रहा। सो ह्यूमन रिसोर्स should may sets the strategies which can develop the resource, which can develop the policies, which can develop the standards, which can develop the system and process according to the requirement of the organization and its requirement in and all with manufacturing and service sector both. So here I have given some few examples because this seminar is for academician, students, industrial managers, corporate managers, and covering each and every area of participant. I have kept top leading companies. So here we can see the top leading company. The first company is Amazon, right? So Amazon has done 500 layoffs recently. लेऑफ का मतलब ये होता है, पर यूजुअली सारे पार्टिसिपेंट को पता ही होगा, लेकिन ये एक सेशन ग्राउंड लेवल पे है, इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ। लेऑफ कब करती है कंपनी? जब कंपनी लॉस में चल रही। सो यहाँ पे टेम्पररी ले ऑफ अमेजॉन जैसी कंपनी को करना पड़ रहा है, राइट, विच इज एन एमएनसी, विच इज लोकेटेड पैन इंडिया, विच इज लोकेटेड all over world, right? So HRD function in manufacturing industry is often concerned with payroll system, with administrative work and mediating between management and workers. So यहाँ पे कहीं ना कहीं Amazon अपनी पेरोल सिस्टम और मैनेजमेंट और वर्कर्स में समानता नहीं ला पाया, उसकी वजह से उन्होंने ले ऑफ किया, राइट? और भी बहुत सारे रीजन हैं, हम देखेंगे अभी। The manufacturing companies lean on HRD function in time of labor unrest and strikes. When company is not able to manage their men and machines, the tools and the labor to produce a specific amount of product or services over a period of time, right? They have to suffer the unlegal strikes or unrest. यहाँ पे एक सर्वे, एक रिसर्च लिखा है, यूएस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलोन प्रोवाइड्स 11.7 million jobs and boost world's 10th largest economy. We can see US economy is the most largest economy around all over universe, and it is providing around 11 million jobs to the company, and the company belongs to manufacturing sector, right? So if India wants to become the superpower, India has to increase their manpower UHRD, that is human resource development, and its efficiency. So India can also become from developing country to developed country only and only when it, most of the time, it depends on manufacturing. We can also see an example of General Electric company of US. Right? There is a survey
which is done in Strategic Human Resource Management Journal. So GE is a global company with operations in more than 100 countries, believing in developing the talent of new employees with the program to, to give in-depth experience and build skills that are crucial for long-term success. So they provide such kind of training. They provide such training which develops experience and skills of their employees. That is General Electric company. So their heritage is to build on continuous learning, which is why they invest more than $1 billion annually in training and development opportunities. You can think as a HR manager or a HR executive, if a company is investing $1 billion per year only in training program to develop their human resources, the company like General Electric, right, which is having more than 100 countries benchmark, is a example of manufacturing sector with training and development offerings, right? We can also see the example of Tata Steels, right? Tata Steel, formerly known as TISCO, Tata Iron and Steel Company Limited, pioneer Ratan Tata, right? World's seventh largest steel company with annual crude steel capacity of 31 million tons. So आप देख सकते हो कि कंपनी की कैपेसिटी, स्टील की कैपेसिटी, क्या प्रोडक्शन की कैपेसिटी, जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ था, राइट, एट दैट टाइम इंडिया के पास एक ही क्लाइंट आया था यूएस से, दैट इज यूएस एविएशन, राइट। उनके प्लेन्स बनाने थे। तब इंडिया में जमशेद जी टाटा जी ने, राइट, उन्होंने बताया था कि वी आर ऑल्सो गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू टाटा फॉर हैविंग सप्लाई ऑफ स्टील्स। इट प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल सर्विसेज टू ऑल एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिलीज टू कंटिन्यू आफ्टर रिटायरमेंट। Plus, it provides monetary incentives to employees who pursue higher education in related fields, along with study leave and scholarship. आपकी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं उनको आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मॉनेटरी इंसेंटिव्स, लीव्स, एजुकेशनल अलाउंस अगर आप कंपनी में नहीं देते हो, राइट, आप बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जायंट टाटा स्टील जैसी कंपनी है, यू वोंट बिलीव, ऑन India is having highest manpower capacity in Tata Iron and Steels Limited after Indian Railways, right? That is TCS, Tata Consultancy Services, which is an IT sector. But again, Tata Steels is also having a manpower capacity of more than, right, 2 to 3 lakhs. You can also see the example of oil and gas company Hilcox, which is at US, right, which is located in Texas. It is having 1,400 employee in Fortune 500 list, which is manufacturing capacity of 1 lakh hefty dollars bonus payout last December. तो दिसंबर 2023 में सिर्फ 1 लाख बोनस सिर्फ उन्होंने क्रिसमस का बोनस दिया। अगर आप आपकी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर, राइट, उनको नहीं संभालोगे, राइट, उनको बोनस वगैरह नहीं दोगे टाइम टू टाइम, व्हाट विल हैपन? वो लोग छोड़ के चले जाएंगे एंड अल्टीमेटली आपकी कंपनी को लॉस होगा। सो दिस इज द ग्रेट प्लेस टू वर्क बिकॉज एम्प्लॉयज डू देयर बेस्ट एंड पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर मेक थिंग्स बेटर फॉर टुमारो, राइट? With strong sales and increased attention from the investment community, manufacturing industries require human capital now more than ever, as they plan to be the fastest growing service sector, right? Now, many small and large enterprises are realizing the value of human capital. ये सारी चीजों होने के बाद अभी सारी मीडियम स्केल और लार्ज स्केल कंपनी को रियलाइज हो रहा है कि ह्यूमन कैपिटल को सस्टेन करवाना और लंबे समय तक उनको रिटेन करना क्यों जरूरी, और वही बिजनेस का सक्सेस। आज आप देखो टाटा आयरन एंड स्टील का कोई एम्प्लॉय 1972 का 72 या 1975 का एम्प्लॉय आज भी कंपनी में टिका हुआ रिटेन है। क्यों? क्योंकि उसको इतना डेवलपमेंट मिलता है, कंपनी में ग्रोथ मिलता है, राइट? सो दैट इज द थिंग।
Other than general challenges of global competition, product development, cost attainment, manufacturing, which are the issues of HR department, right? Which a company faces. वो एक कंपनी में challenges क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग का HRD challenges होती क्या और उसको ओवरकम कैसे किया जाए, राइट? सो सबसे बड़ी कोई चैलेंज है दैट इज रिक्रूटमेंट डिफिकल्ट, राइट? द लार्जर नंबर ऑफ जॉब पोजीशन टू बी filled pose a challenge of HR. What makes the task of fulfilling many job positions even further more complex in the need of specific skill sets required by the worker. आज आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा सिक्स सिग्मा आ गया है। सिक्स सिग्मा मतलब एररलेस मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ही आपकी कंपनी में कस्टमर्स आएंगे, टिकेंगे और कस्टमर सेंट्रिक से कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तब आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा, राइट? लेकिन प्रॉफिट कब होगा? जब कोई स्पेसिफिक स्किल सेट के मल्टी स्किल्ड वर्कर आपकी कंपनी में काम करते हैं। लेकिन आपकी कंपनी के पास टेक्नीशियंस, मल्टी स्किल्ड टेक्नीशियन है ही नहीं, क्या होगा? अल्टीमेटली प्रोडक्शन रुक जाएगा और प्रोडक्शन डिले डिले डिले, कितना डिले, राइट? The more the delay in production, the more loss a company bears, especially in manufacturing sector, right? So second is employee retention. मैंने अभी बताया अगर कोई कंपनी में कोई बंदा टिकता नहीं है, आपकी कंपनी में हर 5 साल में लोग लोग छोड़ के चले जाते हैं, राइट? आइदर इन बॉटम कैरेट, आइदर इन मिडल कैरेट और आइदर इन टॉप कैरेट, राइट? बॉटम मतलब वर्कर, मिडल मतलब एग्जीक्यूटिव, टॉप मतलब कैन बी बोर्ड ऑफ मेंबर्स, राइट? An increase in turnover rate in manufacturing sector is a common phenomenon as people often leave to explore new and exciting opportunities. You can see many companies are facing problems of bankruptcy, facing problem of huge loss, facing problem of the company in a financial crisis, right? Because of attrition ratio, because of increase in attrition ratio. Following is global competition. You can see, right, if you want to retain the top talent and the innovators in this cutting edge of competition, right, you need to give growth to your employee. They are expecting the growth in terms of monetary term, in terms of salary. They are expecting the growth in terms of wages. The worker who are committed, who are talented worker working in your company, they are also working. They are also attracted to learn something new. That is innovators. They want to become innovators, but you are driving them to become the automators in manipulation mode, right? You want to manipulate them with your things. You want to take the things from them, right? So global competition is again a huge challenge, followed by declining workforce, right? Even though the sector seems to be growing and there is perpetual demand for worker, there is a shortage of skilled candidates as salary in manufacturing is highly compared to the combined average salary all across other industries. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे अगर हम गुजरात की बात करें, राइट, तो गुजरात में डायमंड, सूरत एक डायमंड मार्केट है, राइट? सूरत, नवसारी एक डायमंड मार्केट, साउथ गुजरात रीजन में। तो साउथ गुजरात रीजन में हम अगर डिमांडेड वर्कर पर परसेप्चुअल वर्कर वेजिस गिने तो आज एक मल्टी स्किल्ड वर्कर का वेजिस है 550 रुपए। लेकिन कितनी डायमंड वर्किंग कंपनी, कितनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 550 रुपए अफोर्ड कर सकती है? हार्डली 10 में से 2। ऑन पेपर सब झोल चलता है, राइट? दे डोंट वांट टू गिव द अमाउंट विच इज एक्सपेक्टेड बाय देम। तो स्किल्ड कैंडिडेट्स कहां से मिलेंगे? एवरेज पैकेज और सैलरी आप दे नहीं रहे हो और आप डबल अमाउंट आप एक्सपेक्ट करते हो, राइट? The decline in workforce in with average salary standard which is not maintained by the industry, but unfortunately the factor in attracting new and better talent come to the industry,
The talent which is coming to an industry either can be textiles, either can be diamond, either can be any key manufacturing area in parts of India, right? In parts of states, अगर हम states की बात करें, right? India is agrarian country. तो इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बाद सेकंड आ रहा है टेक्सटाइल्स, राइट? हमारी हम अगर बात करें इंडिया की, 4.5% जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडियन टेक्सटाइल मार्केट से आती है। और उसमें भी इंडियन टेक्सटाइल मार्केट में मीडियम और लार्ज स्केल कंपनी बहुत बड़ा प्ले करते हैं रोल। अगर इंडियन विविंग सेक्टर, विविंग और डाइंग और प्रिंटिंग सेक्टर, राइट, टैलेंट को वेजेस अपने डिमांड के हिसाब से दे, तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में चाइना से आगे बढ़ सकता है। आज आप देखो कि इंडिया में जितने भी मशीन आते हैं, राइट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बात करें, जितने भी मशीन आते हैं वो सारे इंपोर्ट करके या तो चाइना से आते हैं या तो वियतनाम से आते हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर्स की, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आगे है, अभी लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आ गया है। लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मतलब जहां पे पहले 10 वर्कर्स की जरूरत थी, अभी आप एक मशीन पे 3 वर्कर्स पे भी काम चलवा सकते। कंपोजिट मिल्स आ गई है, लेकिन कंपोजिट मिल्स में मैन पावर, राइट, उतना कैपेबल नहीं है कि 10 वर्कर का काम 2 वर्कर कर पाए, क्योंकि 2 वर्कर स्किल है ही नहीं हमारे पास। और स्किल वर्कर नहीं होने की वजह से, राइट, एचआर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिकम्स रूल ड्रिवन एंड कंसिस्टेंटली इज अप्लाइंग सम रूल्स। और आप जितना ज्यादा वर्कर्स पे, स्किल्ड मैन पावर की पे जितना ज्यादा रूल डालोगे ना, उतना ज्यादा कंपनी में लॉस आएगा, राइट। मुझे तो ऐसा लगता है जितना आप कंपनी में रूल ज्यादा बनाते हो, रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स, राइट, उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट, और अल्टीमेटली सामने उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। सो एचआर रोल इज टू प्रोवाइड लीडरशिप इन डिजाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विद ग्रोथ। अ पुअरली डिजाइन्ड ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ कैलेंडर। In there we can pour top level talents and hours of efforts into it, right? So top level talents को आप एक ऐसा स्ट्रक्चर दो, एक ऐसी लीडरशिप बनाओ, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ लीडरशिप की, एक डायनामिक लीडर बनाओ, राइट, कंपनी में, जो चेंजेस को एक्सेप्ट करे, टैलेंट को टिकाए रखे, टैलेंट को जाने ना दे, राइट। So a well-designed organization uses its talent effectively, and HR work on it hard to build talent. तो टैलेंट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। Many small to medium scale size company are also aware of this, how effectively human resource leader can contribute to the success of business bottom line, right? So business की bottom line पे कैसे काम करना है, bottom line पे मतलब वर्कर पे, टेक्निकल वर्कर पे ही हमें ज्यादा काम करना है, उनको ज्यादा स्किल्ड बनाना है, राइट। क्योंकि मैनेजर्स तो पढ़े लिखे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके पास तो डिग्री होती है, उनको पता है कैसे काम करना है। मेनली यहाँ पे हमें बॉटम लाइन वर्कर को कैसे ज्यादा स्किल्ड किया जाए, कैसे वर्कफोर्स को ज्यादा स्किल्ड किया जाए, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कैसे अच्छा किया जाए, उस पे हमें काम करना है। So with the perpetual growth in manufacturing industry, the role of HR is to play an more crucial and complex role in future, right? So for future building, it is more important to play, right, a role of HR. So with diligent care, HR can overcome each and every hurdle and do with it, do the best with which can help the company to achieve the new heights of success, right? So HR has to overcome the problems which comes especially in bottom line and supervisory line, right? Supervisory line and bottom line, workers, technicians, right? So from semi-skilled to skilled, from skilled to multi-skilled, and from multi-skilled to extraordinary technicians in a manufacturing sector, which can build the success of the organization, right? So here I am ending my session, right, with the last word, right?
So HR is the rule maker, HR is the rule breaker, right? But a rule maker can extraordinarily come back with the success of an organization. So I'm handing over the platform to Pallavi madam. Thank you for giving me an opportunity to give to share the knowledge which I have, right? Because HRD is an ocean of knowledge, which right. So thank you, madam. Over to you, madam. Pallavi madam. Hello. Yes, madam. I have completed. Uh, yes, sir. Yes, sir. Thank you so much for this very nice session. I Okay. thank you so much all the participant for your active participation. Let me inform to all that this complete session will be available on our Business Rozgar YouTube channel. So if you want to watch it again or want to share it somebody, please do visit the Business Rozgar YouTube channel. Thank you. And last but not the least, thank you, Mr. Dhaval Haryani sir, for taking out time for session. With our permission, I would like to end today's session here. Thank you. Okay. Okay. Thank you, madam.